यहाँ से कंजुगेटेड बिलिरुबिन हो गया. नाउ दिस कंजुगेटेड bilirubin by special type of transporter, it will enter your biliary caniculi system. When it enter the biliary caniculi system, it will enter your intestine, and in the intestine special bacterial protease enzyme will convert the conjugated bilirubin into urine bilirubin. Out of this 10% will be reabsorbed. It will come here by hepatocyte and go into your circulation, and it will leak out by urine. It will expel out because it is water soluble, but remaining 90% of urine bilirubin will be go forward, and it will convert into stercobilirubin, stercobilinogen, and this stercobilinogen will move forward and it will convert into stercobilin, and by fecal matter it will expel out. So stool coloration is yellow coloration. When it remain in open area for 10 minutes or 5 minutes, when oxygen reacts with this, it will turn into dark black color. Okay, dark black color में convert हो जाता है. अभी नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर हम HB का पढ़ते हैं तो इस तरह क्या है, 1 pyroring 4 प्रोटो 4 पायरिंग मिलकर क्या बनाता है, 1 हेम मॉलिक्यूल बनाता है. ये ग्लोबिन चेन है, इट मे बी अल्फा चेन, इट मे बी बीटा चेन, इट मे बी गामा चेन, एंड दिस इज द Fe मॉलिक्यूल, आयरन मॉलिक्यूल, दिस इज हेम. ओके, दिस इज हेम मॉलिक्यूल. प्रोटो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ बिलिरुबिन है. आपको पता है एडल हेमोग्लोबिन टेट्रामर्स है. 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मेक द adult hemoglobin, which is 90 to 99% present in the adult hemoglobin. Okay, अभी क्या है, if there is, you know that if there is urine bilirubin as absent, what will be happen? It means that there is obstruction problem. If there is stercobilin is absent in the fecal matter, so it means that there is obstruction. stercobilin या urine bilirubin absent होगा तो इसका मतलब क्या है, there is abnormality, there is obstruction होगा. डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि ये क्या है, एक obstruction है. You know that ये तो हमने क्या कि नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ लिया. नॉर्मल मैकेनिज्म की किस तरह अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन किस में कन्वर्ट हो जाए, कंजुगेटेड में, फिर यूरिन बिलिरुबिन किस तरह बनता है, स्टर्कोबिलिन किस तरह बनता है. सही है. अगर हम आप एब्नॉर्मल बच्चे के इन द गायनी ऑफ हार्ट doctor are very concerned if new born produce excessive hemolysis, produce excessive amount of unconjugated bilirubin, the baby may increase the high risk of to leak out the central nervous system of the baby. So it may lead to damage the central nervous system of that baby, and this condition is known as mental retardation. This condition is known as Kernicterus. This condition is known as Kernicterus. A bilirubin high goes into central nervous system due to damage basal ganglia, maybe damage neural cell of the baby central nervous system, so it may lead to mental retardation of that baby. What's the reason? A newborn, there is chances of passing of unconjugated bilirubin to central nervous system. Why? The one reason is that blood-brain barrier is not fully developed. The second reason is that unconjugated bilirubin, pre-unconjugated bilirubin is lipid soluble and it is micromolecule, so it will easily pass out the central nervous system of the baby. The second reason is that, what's the second reason? The second reason is that the baby liver is immature, so due to immaturation of the baby liver, the bilirubin binding protein will be not produced normally. So when bilirubin binding protein or trapping protein is low, so unconjugation of the bilirubin is high. Okay, जब बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन जब कम बनेंगे तो ऑटोमेटिक तौर पर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है माइक्रोमॉलिक्यूल ही रहेंगे, तो इससे चांसेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू लीकिंग आउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द बेबी क्या होंगे, हाई अप होंगे, तो कैरेक्टर्स के चांसेस बेबी में ज्यादा होता है.
तो for this baby what will we do? Transfusion or phototherapy? Phototherapy करेंगे तो no liver, there is no need of liver for conjugation, so ultimately the unconjugated bilirubin will convert into conjugated form by phototherapy. Okay, and it will expelled out by urine. इस तरह होंगे. Another thing, हम इस तरह कुछ क्या देते हैं, मेसोपोरपायरिन ड्रग भी देते हैं जो क्या करते हैं, it will inhibit the heme oxygenase enzyme. When we inhibit the heme oxygenase enzyme, what will be happen? The bilirubin, the heme molecule will be not be digested, so the bilirubin level will be decreased. Mesoporphyrin जब use करते हैं, some drug will displace the traffic protein from unconjugated bilirubin. जिस तरह ये binding हुआ है, ये अनकंजुगेटेड, इस तरह बिलिरुबिन ट्रैफिक हुआ है, लेकिन बाद ड्रग ऐसे हम देते हैं जो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, हटा देते हैं. जिस तरह वो कौन से ड्रग है, सल्फोनामाइड ड्रग है, मेसोपोरपायरिन. हाँ नहीं सॉरी, मेसोपोरपायरिन तो करते हैं बिलिरुबिन लेवल को कम करता है. कुछ ड्रग है जो क्या करते हैं, जॉइंटिस को लीड करता है, सल्फोनामाइड ड्रग, पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स और फुरोसमाइड ड्रग आल्सो डिलीट द बाइंडिंग ऑफ द बाइंडिंग प्रोटीन, plasma protein or traffic protein with unconjugated bilirubin will be displaced, so it will convert from macromolecule, it will convert into micro, so chances of leaking out into tissue will be high, so chances of jaundice or damaging of the tissue will be high. तो इसी तरह jaundice के chances इसी तरह कुछ ड्रग से भी होता है. और anti-tuberculosis drug which will be inhibit the sinusoidal side, so unconjugated bilirubinemia will be occur. Okay, इस तरह होता है. Some patient have dominantly unconjugated bilirubinemia, while some patient have dominantly conjugated bilirubinemia. If some patient have unconjugated bilirubinemia, there are three reasons. One reason is there is excessive hemolysis. When there is excessive hemolysis occurs, so chances of bilirubin level will be high. When there is bilirubin, unconjugated bilirubin will be high. Suppose this is 50% conjugation occur, and there is unconjugated bilirubin is making 100%. So it may lead to unconjugated by hemolysis, excessive hemolysis. One reason is excessive hemolysis. Second one reason may be poor uptake. When there is poor uptake by liver, unconjugated bilirubin is poor uptake by liver, so chances of unconjugated bilirubin will be high. The third reason is, what's the third reason? The third reason is maybe bilirubin production normal, problem with conjugation, maybe deficiency of glucuronide transferase enzyme. When there is glucuronide transferase deficient, so unconjugated bilirubin will be not converted into conjugated form, so chances of unconjugated bilirubinemia will be high. The other three reasons with conjugated bilirubin. Why conjugated bilirubinemia high? Maybe there is transporter. Conjugated bilirubinemia may be transporter problem of conjugated bilirubinemia into biliary canaliculi system. The second one reason is maybe intrahepatic obstruction, maybe extrahepatic obstruction. If there is intrahepatic obstruction, so conjugated bilirubin will be directly regurgitated into your circulation, so conjugated bilirubinemia occur. If there is extrahepatic obstruction occur, so conjugated bilirubinemia will be occur because it will be directly regurgitated into your circulation. Okay, if there is defection in the gene which is responsible for the production of what, GTR or glucuronide transferase enzyme, if there is defection, so there will be mild, moderate or severe deficiency of glucuronide transferase enzyme, and 2 to 7% there is mild deficiency of glucuronide transferase enzyme. So in this type of patient, or people, they don't develop jaundice because there is mild increased level of unconjugated bilirubin. This is Gilbert syndrome. It is, you know that in some patient there is severe deficiency of conjugated bilirubinemia, which is known as severe deficiency of glucuronide transferase enzyme. There are two types.
type 1 and type 2. And in type 1 there is severe deficiency of glucuronidtransferase enzyme, while in moderate there is moderate, and type 2 there is moderate deficiency of glucuronidtransferase enzyme. Okay, this condition is known as Crigler-Najjar syndrome. Crigler-Najjar syndrome is two types, type 1 and type 2. Okay, you know that unconjugated bilirubin due to overpresentation of unconjugated bilirubin to liver, or decreased uptake of liver, or due to impaired conjugation. What is, you know that there are two types of hepatitis. There are two types of hepatitis. What's the two types? One is infectious. Second one is non-infectious. Infectious may be viral. Infectious may be infectious may be viral, bacterial, protozoal, or fungal. While non-infectious mean may be chemical substances lead to non-infectious hepatitis. Okay. There are two types: hepatotropic, the viral or germs which only damage the liver. This is known as hepatotropic. Non-hepatotropic, the virus or bacteria which damage other than liver, liver and other tissue also. This is known as non-hepatotropic or virus or bacteria. Okay. You know hepatitis A, B, C, D. These are types of virus. Okay, cytomegalovirus also lead to hepatitis. This is the infectious hepatitis. Bacterial like Leptospira acetohemorrhagica. Leptospira acetohemorrhagica. This is present in the urine of the rats. The person who जो सीवरेज का काम करते हैं, तो यूरिन ऑफ द रेट्स क्या होते हैं इसमें? लेक्टोस्पेरा एक्टेरोहेमोरेजिका वायरस, वो बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं इन दैट टाइप ऑफ पर्सन और सीवरेज पर्सन हु डू द वर्क ऑफ सीवरेज, देयर मे बी चांस ऑफ लेक्टोस्पेरा एक्टेरोहेमोरेजिका हेपेटाइटिस, हेमोरेजिका इनटेक, सो इट मे लीड टू इन्फेक्टियस बैक्टीरियल हेपेटाइटिस. सही है. इसी तरह टोक्सोप्लाज्मा भी हो सकता है, टोक्सोप्लाज्मा की वजह से भी होता है और एमीबा की वजह से. टोक्सोप्लाज्मा ज़्यादातर कैट्स में होता है. जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उसको ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि अगर वो इसके साथ ज़्यादा करीब क्लोज अप रहेंगे तो मे बी देयर चांसेस ऑफ मे बी क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इट मे बी डैमेज द आई ईयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी fetus. ओके. नॉन इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस में क्या होता है? अल्कोहल हो सकता है, ब्लीचिंग पाउडर जिसमें क्या कहते हैं CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसके फ्यूम्स की वजह से क्या होता है? नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस की वजह से भी होता है. इसके अलावा होमोक्रोमोटोसिस क्या है? व्हेन वी ओरली इनटेक हाई अमाउंट ऑफ आयरन इट मे लीड टू होमोक्रोमोटोसिस, इट मे डिवेज द लिवर. तो हेपेटाइटिस भी इसकी वजह से हो सकता है. सही है. माइकार्डियल डेथ भी हो सकता है इसकी वजह से, हेमोक्रोमोटोसिस की वजह से. All autoimmune disease related to MHC class 2 molecule and class 1 molecule. MHC class 2 molecule mainly and female, while MHC class 1 molecule mainly present in the male. ये present male में ज़्यादातर होता है. ज़्यादातर itching भी होता है ड्यू टू जॉइंटिस. फीमेल में क्या होता है? जॉइंटिस होता है बिकॉज बाइल क्या होता है? As bile acid also irritant to the mast cell, so it will activate the mast cell. By activation of the mast cell, it will produce the severely itching. Itching jaundice की वजह से होता है. ज़्यादातर फीमेल में होता है आफ्टर 30 इयर्स जो फीमेल होते हैं. सही है. अभी ड्रग कुछ जो ड्रग होता है जो क्या करते हैं बाइलियर ड्रेनेज सिस्टम को कुछ एस्ट्रोजन, जब एस्ट्रोजन लेवल फीमेल में ज़्यादा होता है, जो ज़्यादातर पिल्स कंट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं जो लीड करता है एस्ट्रोजन लेवल को, जब जिन फीमेल में ज़्यादा होता है तो क्या करता है इट मे लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइलियरी कैनोकुलाई सिस्टम. सही है. तो गॉल ब्लैडर स्टोन फीमेल में चांसेस क्या होते हैं ड्यू टू कंट्रासेप्टिव पिल्स की
यूज ज़्यादा करते इसी वजह से। तो प्रेगनेंटी female not pregnant and taking pills again and again, so it will increase level of estrogen and due to this it may lead to cholestasis. तो cholestasis लीड करता है। As a good doctor you must know jaundice due to hemolysis. As a good doctor you must know